Good morning, sir. Good morning. Namaste. Namaste, namaste. छान. बरं वाटतं. खिंची सरांची बोलणं झालं. हा सर. हा सर. खिंची सर आहे. सर जी गुड मॉर्निंग. खिंची सर. Thank you. Good morning, sir. मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. नमस्ते सर. सर बोलतायत सर ना. तुम्ही करतायत मग सर. सर व्हॉट ऑफ चालेल. खिंची सर करते. सर आप करेंगे या मैं करूं? तुम्ही बोला सर मग. ओके. प्रिंसिपल सर टाइम दे दें. नहीं ओके चलेगा. पुनिया से मैंने बात कर ली. वो शाम को थैंक दे देंगे सर. पुनिया. हाँ प्रिंसिपल सर हमारे. अच्छा तो थैंक्स गिविंग पुनिया सर करेंगे. पुनिया सर. हाँ जी. हेलो. जी सर. हेलो सर. आवाज नहीं आ रही सर. हेलो. हाँ हेलो. जी सर. हेलो. जी सर. नाही सर. हा सर. त्यांचे प्रिन्सिपल हे करणार आहेत का? थँक्स. प्रिन्सिपल त्यांचे पुनिया सर. जी सर. जी सर. ओके. डॉक्टर MS पुनिया. ओके. यस सर. ओके सर. सर त्याच्या आधी तुम्ही बोलाल सुरुवातीलाच बोलतो. चालेल. बरं सुरुवातीलाच बोलतो. सुरुवातीला बोलत चालेल आणि त्यांच्या आधी पण आपण तुम्हाला एक दैवत सर म्हणजे असं चालेल का? बरं ठीक आहे. हा तेव्हाही बोला वाटतं 2 मिनिटं तेव्हाही बोला. ओके. दिनेश सर. आवाज सुन रहे सर. दिनेश सर. ना रहे सर. सुन पा रहे सर मुझे? हाँ कुछ कहना है सर. हेलो. नहीं वो सर से पूछ रहा था नारे सर से कि वो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आपके पास है या मेरे पास है? रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन उनके पास. वो माने सर. हाँ वो करेंगे करके. रिकॉर्डिंग मेरे पास है सर. ठीक. कल मेरे पास भी था ये ऑप्शन. हाँ वो क्लाउड का था सर वो. अच्छा. ठीक सर. थैंक यू. ओके.
सर अनम्यूट केले. हाँ महाले सर. Yes, sir. Please unmute to Bansude sir. BS Bansude sir. Unmute him. Yes, sir. Mahale sir, good morning. Morning, sir. Sorry, sir. आवाज येतोय ना? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. And sequence is today we are going to also be a national anthem, no, at the beginning of the program. Yeah. Same as yesterday. Yes, sir. Yes, yes, sir. Shall we start, sir? Yes, sir. Yes, sir. The dignitaries. Hello. And the honorable chief guest of today's program, and my dear respected participants, I call upon you to stand up for the national anthem. Over to Mahale. Thank you very much. A very good morning, one and all. Honorable the President of the institution, Sanjeevan Gramin, Vaidyakiya Samajik Sahayata Pratishthan, Sri Vijay Patil Sahib, Honorable Punia sir, Honorable the Principal of our college, Dr. H.M. Ambedkar sir, and Chief Guest of today's program, Aarti Nayak ma'am, Honorable Braganza ma'am, and my dear participants. I welcome you on behalf of the institution, Sanjeevan Gramin Vaidyakiya Samajik Sahayata Pratishthan, and its Arts, Commerce, Science College, Onde, and Dr. B.R. Ambedkar Government College, Sri Ganganagar, Rajasthan. And on behalf of the organizing department, Department of Botany, Department of Geography, Department of Environmental Studies, and the Department of PG Studies in Geography, Dr. B.R. Ambedkar Government College, Sri Ganganagar. I welcome you all to the two-day national workshop on this topic, that ecological footprints. At the very outset, may I request the Honorable Principal of our college, Dr. H.M. Ambedkar sir, to deliver his welcome speech. Over to H.M. Ambedkar sir. Sir. Thank you. Good afternoon, everybody.
Charlotte Braganza and Professor Aarti Nayak. And yesterday was the introductory session. Now, how to implement that, how to use ecological footprints, and what is the practical utility of that, how we can calculate ecological footprint is a very interesting topic. And both these resource persons are going to explain it to us. Say this webinar is different from other webinars as it has got practical utility, and we can make use of this information in our day-to-day life and understanding the environment in much better manner, in practical manner, and we can pass on this information to our students. So I request all participants to be attentive, and at the same time, they can ask their doubt because this is a new topic for many of us and at the end of the session. And I also request the resource person, as most of the participants are from different parts of India. So can you use a bilingual mode of presentation, that your slides will be in English, but while talking, if you can use Hindi also, so a mixture of Hindi and English, it will be useful to many people. So once again, I thank all participants. I also thank Dr. M.S. Punia from Sri Ganganagar, Dr. B.R. Ambedkar College, Dr. Khinchi, and all my colleagues. Thank you. And I welcome resource person for this webinar. Thank you. Sir, over to sir. Yeah. Thank you very much, sir. Now we have precious words from the president of the institution, Sri Vijay Patil Sahib. Mahale sir, over to you. नमस्कार. कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय ओंदे तालुका विक्रमगड जिल्हा पालघर या महाविद्यालयातर्फे होणाऱ्या वेबिनारला माझ्या अध्यक्ष म्हणून हार्दिक शुभेच्छा आहेत. हे वेबिनार यशस्वी करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांची सहकार्य असावं अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद. Thank you, sir. Now, may I request Professor Nahire, sir, the head of the Department of Geography, to introduce the resource persons of today's program. Over to Nahire, sir. Thank you, Bansude, sir. Already, yesterday only I did the introduction of both resource persons, but some of the participants, they have joined today, newly joined today. So I would like to introduce today's resource persons. Very first, I am very much thankful to the organizers to give me an opportunity to introduce today's resource person. So very first, I am again thankful for the Honorable Vijay Patil Sahib, the President of Sanjeevan, Gramin, Vaidyakiya and Samajik, Sahayata, Pratishthan, Onde, as the Chairman of our college, and our Principal, Dr. Richard Petega, sir, for organizing these 2 days national level webinar on ecological footprints. Now, I'm going to introduce today's resource person. Very first, today's resource person is Dr. Charlotte Braganza. She is Assistant Professor in Environmental Studies at SK Somaiya College of Arts, Science and Commerce, Mumbai. She attended her doctorate degree from the University of Mumbai. Her specialization has been Heritage Geography and Geography of the Landscapes, novel fields in the branch of Geography. She has been the Vice Principal of the college. Presently, she is the convener of the examination committee. She is an instructor at Coursera for the course conducted by the University of Alberta, Canada. She has conducted and participated in various seminars and conferences. So this is the brief introduction about today's first resource person, Dr. Charlotte Braganza, madam. Now I would like to introduce today's another resource person, Professor Aarti S. Nayak, madam. She is an assistant professor in the Department of Mathematics and Statistics and Computer Science at SK Somaiya College of Arts, Science and Commerce, Mumbai.
She did MSc in mathematics from University of Mumbai. She also hold a higher diploma in software engineering from Aptech Education Limited. She has submitted her thesis titled Use of Mathematical Models to Enhance Healthcare Industry, Viva Awaited. She has a teaching experience of 20 years. She has taught the subjects mathematics, statistics, computer like SQL, computer programming, robotics, etc. So again, there is a lot to say about both the madams, both the resource person, but due to the time limit, I conclude here. And on behalf of all, again, I warmly welcome to both of the resource person and thankful for giving their valuable time for all of us. Thank you so much. Over to you, madam. Over to you, Braganza, Charlotte Braganza, madam. Am I audible? Yes, yes. Okay. Yes, Very Charlotte good. ma'am. Yes, thank Did you, you hear Aarti. me, madam? Yes, thank you, Aarti. Thank you, sir. Yes, yes, yes. Okay, Yes, okay. yes. A very good afternoon to all, and thank you once again for joining for a wonderful in a wonderful afternoon. At the outset, I would like to thank both the principals of both the institutes for coming together for this wonderful joint venture. A special thanks to Dr. Bansode, Mr. Dinesh Nahire and Namdeo Mahale for doing a wonderful job. It has been a tedious job, but I think they're doing it excellently. Thank you, sir, so much. Thank you, Dr. Shyam Khinchi, for joining us today. And just to give a briefing, yesterday we explained to you the need of ecological footprints with a small briefing on Microsoft Excel. Today we are going to give you a introduction to what exactly is ecological footprints with examples, and that will be followed by Aarti Naik madam, who will be talking on how ecological footprints are going to be calculated. After that, we will have an interpretation on how and what are the solutions for ecological footprints. So I would like to start. Is it clear? Is my screen clear? Yeah, ma'am. Yeah, okay. Thank you so much. I really apologize for yesterday, as I think my font was a bit small, but today I took care with the help of Aarti. Thank you, Aarti. So today we start with ecological footprint. Thank you, Charlotte ma'am. Yeah. So I'll just start with an introduction to ecological footprints. As I was just informed that I need to have a little bit of bilingual. I'll try my level best, friends, and where I can help, I will, of course, because this is a knowledge I believe has to be shared, and I will do my level best to share. Okay, thank you so much. So let's start with ecological footprints. In Hindi, it's called Paristhithik Padchinha. The definition: an ecological footprint is a quantitative measurement of how much ecologically productive land and water an individual population or activity requires to produce all the resources it consumes and to absorb the waste it generates. In the simplest of the terms, ecological footprint is the only metric that measures how much nature we have and how much nature we use. Measuring how fast we consume resources and generate waste compared to how fast nature can absorb our waste and generate new resources. Ecological footprints accounting measures the demand on and supply of nature. On demand
The ecological footprint measures the ecological assets on supply, a city, a nation, a state. Biocapacity represents the productivity of its ecological assets. Now, to make this simple, I would like to tell you a small little story. There was once a pasture in an English country that was open to all. Since the land did not belong to anyone, any number of herdsmen would bring their cattle to it for grazing. As the number of herdsmen and their cattle increased, the pasture available to each herdsman decreased. Due to the continuous grazing of cattle, the land also lost its fertility, and as the grass did not get the time to renew itself, ultimately the land became unusable to everyone. This is a scenario described by American ecologist and philosopher Garrett Hardin in his article, The Tragedy of Commons, published in 1968. Hardin defines the commons as a shared resource that cannot be claimed. However, its assets to his or her benefit. This planet of ours is a commons too. Every person here depends upon some land area to fulfill his her needs of food. उसको साधन बोलते हैं, shared resource for all. Linking the consumption patterns and the land or water area available on the earth to the demand and the supply side, the ecological footprint must be equal to or less than the biocapacity. Ecological footprint is the ecological services that a given population requires to produce the natural resources it consumes and to assimilate waste and carbon emissions generated. Whereas biocapacity is the productivity of the planet's ecological assets to regenerate its natural resources and absorb the waste and carbon emissions gathered. Now, I will give you an idea of what biocapacity actually means. Description of certain land use types. I will just give you an idea. You have arable land is biologically the most productive land. It can grow the largest amount of plant biomass. It is typically used for stable crops such as grains and tubers. Then you have built up land. It refers to land productive capacity lost by development such as road and building. Then you have carbon dioxide land. It is the land that would be needed to sustainably manage our energy demands. Then you have conversion factors for energy for fossil fuels, energy sources, coal, liquid, fossil fuels, and gaseous fossil fuels. The conversion factors are estimates of the land area needed. Then you have the fishing grounds. Most commercial fishing grounds, around 90% of the catch occurs within 300 kilometers of the shores. And then we have our forest lands, refers to the farmed or natural forest that can yield timber products. And last, we have the pasture lands. The pasture lands are primarily used for grazing cattle. It is less productive than the arable lands. So that's a brief about biocapacity. Today, the Earth's human population, as I mentioned in my slide, of the Earth is about 7.62 billion, and the ecological footprint of the planet is so high that it will take nearly 1.7 Earths to fulfill the demands of this population. Friends, I would like you to retrospect on this aspect, which is very important. Now we have the measurement. This is how ecological footprints will be measured. An ecological footprint is usually measured in global hectares. A global hectare is a biologically productive hectare with world average biologically productivity for a given year. Biologically productive land and water are areas that support significant photosynthetic activity and the accumulation of biomass used by humans.
The total biologically productive land area on land and in water in 2014 was 12 billion hectares. Dividing by the world population in 2014, 7 billion, provides 1.7 global hectares per person. Kindly note the numbers. ये गणना है. So now we have the ecological footprint. This is just a representation. I think this slide has been repeated. Oh, 1 minute. Yeah. So you have right now the global ecological footprint. Yes. 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 Can I continue? Hello. Can I continue? Continue. Yes, you continue. Yes. The global ecological footprint was 2.75 global hectares per person to 22.6 billion total. Average biocapacity was 1.63 global hectares. We are in a global deficit of 1.1 global hectares per person. That is, if a country does not have enough ecological resources within its own to cover its population footprint, then it runs as an ecological deficit and country is termed as an ecological debtor. Okay, we say dendar. Okay, otherwise it has an ecological reserve and it is called a creditor. Now I have a small information for you which I would like to show you how we have 1 minute. We have a non-profit organization called the Global Footprint Network, which takes care of calculating all these ecological footprints. And this started in 2003 by United States, and you had Denmark, 3 countries coming together. And since then, they have been calculating the ecological footprints of countries. So I've taken this data from them, and they are calculating the footprints for almost 200 countries in the world. So I would like to share this with you. Are you able to see it? Hello? Are you all able to see it? Yes, 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 it okay. is visible. Yeah, so here you have the Ecological Footprint Explorer. Yeah. So, yes, Canada. Can you see Canada 2016 biocapacity 15.1, ecological footprint 7.7. Okay. Then we have the United States. And we have Mexico. And we have Brazil. And let us go to our very own India. It's hiding somewhere. Okay, we go to China. That's China. And we have India. Okay, so here we have India. Look at India, friends. And just randomly, we'll take a country in Africa. So you have Congo. And you have Angola. And you have Papua New Guinea. And Australia. So this is giving just gives you an idea. If you want to, you can go to this site and it gives you all the information on almost 200 countries on the biocapacity, on the ecological footprint, whether a country is a debtor or a creditor, all the details are given. So I'll get back to my slide. Yeah. Yeah. So that's it. Now here was one example which I wanted to give you. Sorry. Yeah. The footprint of United States is approximately 9.57 global hectares per person. So if everyone on the planet was to live like an American, we need 5 planets to sustain everybody. Okay. Now our very own country, India, friends, we need to know more about our own country because we need to work on this aspect. According to the National Footprints Accounts 2014,
India has an ecological footprint of 1.12 global hectares per person and a biocapacity of 0.45 global hectares per person, which means it is a biocapacity debtor or an ecologically deficit country, with there being a 148% more demand than supply on its natural resources. A point to be noted, friends. So this is a small table that has been prepared, which I have taken from the global network. And these are some of the countries with the largest and the smallest ecological footprints. Friends, please note, India is number 3. So here we are. India ranks 3rd in its ecological footprints due to its high population levels, despite a low per capita consumption of natural resources. Top 2, you have China and USA. National footprints accounts 2016 by the World Bank. Cropland and food include cropland and forest footprints were the largest components of India's overall ecological footprint until the late 1980s. The carbon footprint took over in the late 2000s, and India's carbon footprint currently makes up 53% of the country's overall ecological footprints. Friends, now to talk about India. India has the 3rd heavier ecological footprint in the world, and its resource use is double its biocapacity. The total ecological footprint of India is heavy because of its population of over 1 billion people, which is a 7th part of the global population. In spite of this, compared with others, India is one of the countries with a lighter ecological footprint. The average Indian has an ecological footprint 9 times lighter than the US citizen, 3 times lighter than the global footprint. The comparison with other societies show that India is one of the countries with lighter ecological footprints in global hectares per capita. The average Indian has thus an ecological credit, but because it contributes very little to threaten the global sustainability. Why? Let us move on to why India has a light ecological footprint per person. India has a light ecological footprint because it has a large population with an extremely light ecological footprint. However, it has also 200 million middle class and rich people with consumerist aspirations and lifestyles. The light ecological footprint of India results only partially of material deprivation from the basic things needed for a decent life, such as food, water, energy, sanitation, housing, learning, and health. To a great extent, it results from the ability of the Indian society to meet material needs with minimum pressure on the environment. Frugal habits associated with a decentralized territorial organization in villages and combined with extended families and communities are the ways followed by millions of people in India. These features significantly reduced the consumption of natural resources and helped explain its light footprint 0.9 global hectares per person. There is a decentralized distribution of over 1 billion people in hundreds of thousands of semi-self-reliant villages, which obtain supplies of food, water, energy, and materials nearby without the need for large displacements. The economy of means to perform the daily activities at home or at work, the economy of the furniture, your objects and implements, vegetarian, that makes more with less, respects the environment, and avoids wasting natural resources. These qualities are more evident in an Indian village than in any other pattern of settlements. The transport system is relieved by the proximity between home and work. Mobility on foot, human powered, on bicycles and rickshaws, the use of animal power with bullocks,
bullock carts, camels, elephants, small motor vehicles such as scooters, motorbikes and auto rickshaws, intensive use of an efficient mode of transportation such as the network of railroads running through the country. So that's it about India, friends. And yes. So this is an important aspect. I don't know how many of you might be knowing it. We have something called the World Overshoots Day, or it's called the Earth Overshoots Day. Now, what is the Earth's Overshoots Day? I'll just explain the concept to you. The Earth Overshoots Day marks the date when humanity's demand for ecological resources and services in a given year exceeds what Earth can regenerate in that year. We maintain this deficit by liquidating stocks of ecological resources and accumulating waste, primarily carbon dioxide in the atmosphere. Earth Offshoot Day is hosted and calculated by Global Footprints Network, an international research organization that provides decision makers with a menu of tools to help the human economy operate within Earth's ecological limits. To determine the date of Earth Overshoot Day for each year, Global Footprint Network calculates the number of days of that year that Earth's biocapacity suffices to provide for humanity's ecological footprint. The remainder of the year corresponds to the global overshoot. Earth Overshoot Day is computed by dividing the planet's biocapacity, the amount of ecological resources Earth is able to generate that year, by humanity's ecological footprint, humanity's demand for that year, and multiplying by 365. The number of days in a year, Earth's biocapacity upon humanity's ecological footprints into 365, friends, is equal to the Earth's Overshoot Day. And friends, this year, the Earth's Overshoot Day is 2 days from today, which is August the 22nd. How is this calculated? The data is calculated. The data is collected from about various countries' economic activities, agricultural productivity, imports and exports, energy consumption. This data calculates how much food, apples or your fruit juices or your pasta, how much you have eaten, how much wood is used for furniture, how much energy households are using, and so on. These offices report the data to international agencies, including the United Nations, that distribute this information in consistent formats for most countries in the world. And Global Footprint Network, which calculates the ecological footprint for more than 200 countries, gets the data from these international offices and applies them to its comprehensive accounting databases to calculate how many resources each country consumes. So friends, that's it for me now. Just an introduction to ecological footprints, biocapacity, and the importance of Earth Overshoot Day. We are celebrating it on 22nd, the day is on 22nd August, friends. And now over to Aarti for the practical session. Aarti? Yeah. Thank you, Charlotte. Can you hear me? Yes, Aarti, we can hear you. Yeah. Thank you, Charlotte, ma'am. Charlotte, ma'am, you stop sharing. Yes. Okay? Yeah. A very good afternoon to all participants, all the teachers present. Yesterday we saw what were the basics of Excel. Just now Charlotte madam has also explained what is ecological footprint. She has given some basic idea. Now, actually, I am not from the subject of EVS or geography, but as far as I understood is this ecological footprint calculator,
will show us how much of the resources of the nature we are using and what can be done so that the resources can be used minimal, because as such we are not doing anything to give back to nature. हम सिर्फ वहां से यूज कर रहे हैं, नेचर से हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, बट उनको वापस देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और इस तरह से प्रकृति का कर्ज है हमारे ऊपर, हम उनके रिसोर्सेज सिर्फ यूज किए जा रहे हैं। सो ये एक्सेल शीट में हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है फुटप्रिंट और कितना ज्यादा है। नाउ दिस एक्सेल शीट has certain parts. You can see, I'll just scroll down. Some cells you can see in blue and some things you can see in green. The things which are in blue are supposed to be entered. यहाँ पे हमको डेटा डालना है, और जैसे मैंने कल बताया था एक्सेल में रिकैलकुलेशन होता है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला डालेंगे तो कैलकुलेशन हो जाता है। यहाँ पे मैं अमाउंट जो डालने वाली हूँ वो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेट अमाउंट डाल रही हूँ, एंड स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन कि क्या कैलकुलेशंस हो रहे हैं। नाउ टू स्टार्ट विथ, दिस इज द फर्स्ट Excel sheet is visible. Yeah. Now the first thing, ये जो है यहाँ पे, how many minutes of energy it takes to earn $1. Now this worksheet is according to dollar. यहाँ का नहीं है, ये बाहर का है, so यहाँ पे हर चीज हमको डॉलर में करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऊपर मैंने अमाउंट, मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है। यहाँ पे जैसे ही आप अमाउंट एंटर करोगे, करस्पॉन्डिंग अमाउंट इन डॉलर्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला डाला हुआ है ऑलरेडी, करंट रेट के हिसाब से डॉलर अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ फर्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पे डालना है हमको, एंटर योर इनकम एंड अवर्स वर्क। सो द वेरी फर्स्ट एंट्री इज डॉलर्स अर्न पर मंथ। सो फर्स्ट क्या करेंगे, हमको यहाँ पे डालना है हम हर महीने कितना कमा लेते हैं, बट वो हमको डालना है डॉलर्स में। सो मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ पे मैं डालूंगी, से फॉर एग्जांपल मैंने अमाउंट लिया 50,000, तो करस्पॉन्ड उसका आंसर यहाँ पे आ जाता है, it is $67. So here I will enter $667. Second entry, work related dollars per month. Now इसका मतलब क्या है, work related dollars spent per month is, अभी हम सब प्रोफेसर फ्रैटर्निटी के हैं, हमारे हर महीने कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। खर्चे किसके लिए, हमको पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैंने एक कोर्स कर लिया, उसके लिए मैंने कितना स्पेंड किया, मैंने कुछ प्रिंट आउट्स लिए, वो स्टेशनरी के लिए कितना स्पेंड किया, या जो भी मेरे काम रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो यहाँ पे आएंगे। वर्क रिलेटेड डॉलर स्पेंड पर मंथ। सो सपोज मैं अप्रोक्सीमेट अगेन नंबर ले रही हूँ कि 1,000 रुपीज पर मंथ आई एम spent for whatever I require for my lectures. Now when I enter dollars, it 30. यहाँ पे डाला 30. Next hours of आपने घंटा कर रहे हो, तो अभी हर जगह अलग अलग होता है। से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ पे 8 घंटे दिन का पकड़ो, तो 40 घंटे अगर हफ्ते का हम पकड़ते हैं, तो मैं 40 घंटे यहाँ पे डाल रही हूँ। इट मे वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल, जहाँ पे जैसे काम कर रहे हैं उस हिसाब से पर वीक डालना है। यानी अगर दिन के 5 घंटे आप कर रहे हो तो 5 × 6 30 आएगा। मैंने 8 के हिसाब से डाला है तो यहाँ पे 40 है। नेक्स्ट कॉलम है अनपेड आवर्स पर वीक और वर्क प्रिपरेशन। अनपेड आवर्स मीन्स तैयारी करने के लिए हम कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल अभी कल हमारा, तो आज लेक्चर के लिए हमने क्या क्या प्रिपरेशन किया, या हम ट्रैवल कर रहे हैं, कॉलेज जाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, वापस आने के लिए ट्रैवल। सो जो भी काम हम हमारे पढ़ाने के अलावा या पढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं, उसमें हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं पर वीक, वो हमको यहाँ पे डालना है। तो सपोज मैं डाल देती हूँ 25। नाउ ये पूरे 4 एंट्रीज आप डालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक नंबर आ गया है ऑटोमेटिकली। ये नंबर क्या है, ये नंबर है, इट टेक्स
26 minutes of life energy to earn $1. यानी मेरे डेटा के हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे डाला है यानी डॉलर्स अर्न पर मंथ, डॉलर्स वर्क रिलेटेड डॉलर स्पेंड पर मंथ, आवर्स ऑफ वर्क पर वीक, अनपेड आवर्स, ये सब इंफॉर्मेशन डाल के एक नंबर मिल रहा है. दैट नंबर इज शोइंग मी कि टू अर्न $1 I have to spend 26 minutes of my life energy. So जिस हिसाब से आप अलग अलग डालोगे उस हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा. ये हो गया फर्स्ट पोर्शन which shows calculate how many minutes of life energy it takes to earn $1. नेक्स्ट है उसमें चूज वेदर यू वांट टू वर्क विद यूएस और मेट्रिक मेजरमेंट्स. हम मेट्रिक ही यूज करने वाले हैं. कहता है यहाँ पे मेन पार्ट. अभी यहाँ ये जो नेक्स्ट हमारा वर्कशीट है इसमें हम एंटर करेंगे हम डेली हम किस किस में क्या क्या कितना यूज कर रहे हैं. सो नॉर्मली अगर आप ये भरना चाहोगे और देखना चाहोगे आपका फुटप्रिंट कितना है तो आपको पूरी फैमिली को लेके पूरे फैमिली से बात करके उनसे डेटा कलेक्ट करके भरना है. बिकॉज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू फैमिली. ये इंडिविजुअल नहीं है. हमारे फैमिली को कितना लगता है मंथली वो हम मिलके यहाँ पे डालने वाले हैं. सो पहला एंट्री यहाँ पे है नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस होल्ड. अभी मेरे यहाँ पे 3 लोग हैं तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 3. ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी एंट्रीज हम डालने वाले हैं वो ये सब एंट्रीज ये नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से कैलकुलेशन होके हमको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मिलने वाला है. सो नंबर ऑफ पीपल हाउस. नेक्स्ट है नेक्स्ट कैटेगरीज है फूड. जैसे शार्लेट मैडम ने एक्सप्लेन किया था कि वेरियस कैटेगरीज आर कंसिडर्ड टू कैलकुलेट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. लाइक फूड है, फर्नीचर है, कपड़े है, जो भी हम यूज कर रहे हैं सब हम नेचर से यूज कर रहे हैं. कहीं ना कहीं से नेचर आ रहा है तो जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सब हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं. अभी यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या है? एंटर परसेंटेज ऑफ फूड परचेस्ड दैट इज वेस्टेड रादर देन ईटन इन आवर हाउस होल्ड. सो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है 26%. यदि आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो. सेकेंड है हाउ मच फूड ऑफ द फूड दैट यू ईट इज प्रोसेस्ड, पैकेज्ड एंड नॉट लोकली ग्रोन. नॉट लोकली ग्रोन यानी अपने आसपास उसको उत्पन्न नहीं कर रहे हैं. अभी हम मुंबई शहर में रहते हैं तो हमारे तो यहाँ उत्पन्न होता नहीं, हम खरीद के लेके आते हैं. सो मैंने ऑप्शन डाला है यहाँ पे ए. अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है. ए है मोस्ट ऑफ द फूड आई ईट इज प्रोसेस्ड, पैकेज्ड एंड फ्रॉम फार अवे. अभी हम मुंबई में जब रह रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई खेतीबाड़ी नहीं करते तो हमारा कोई खुद का उत्पन्न नहीं है, हम सब बाजार से लेके आते हैं. सो हमने ये ए ऑप्शन डाला है. बी ऑप्शन है 3/4, सी है हाफ, डी है 1/4 एंड ई वेरी लिटिल. 3/4 यानी बहुत पूरे साल नहीं, बहुत कम समय के लिए हम बाहर से लेके आ रहे हैं, हमने आधे समय के लिए लेके आ रहे हैं एंड सो ऑन. और लास्ट जो ऑप्शन है इज वेरी लिटिल, मोस्ट ऑफ द फूड आई ईट इज अनप्रोसेस्ड, अनपैकेज्ड एंड लोकली ग्रोन. यानी आपके यहाँ आसपास आप सब उत्पन्न कर रहे हैं और वही आप यूज कर रहे हो तो आप ये ऑप्शन ई डाल सकते हो. और ये सब ऑप्शंस मैटर करते हैं क्योंकि ये जो फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखे गए हैं ये सब ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर है. अब हम जाते हैं नेक्स्ट एंट्री के लिए है फूड सेक्शन में है. अभी हम फिलहाल फूड सेक्शन में है फर्स्ट एंट्री. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी एंट्रीज है. ये वो एंट्रीज है जो हम अपने रोज के जीवन में यूज करते हैं. फल है, सब्जी है, दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, जो भी है सब यहाँ पे डाला हुआ है. जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो अमाउंट है ब्लू में आपको दिख रहा है वो हमको सिर्फ डालना है. बाकी ये अपने आप कैलकुलेट होगा. ये ऑप्शनल है. जो भी ग्रीन में आपको दिख रहा है आपको अगर डालना है आप डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा. और बाकी सब चीजों के लिए ऑलरेडी फॉर्मूले लिखे गए हैं. आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप ऊपर फॉर्मूला बार में देख सकते हो. यहाँ पे फॉर्मूले ऑलरेडी लिखे गए हैं, हमको सिर्फ वैल्यूज डालने हैं, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा. अभी फर्स्ट एंट्री है वेजीज, पोटैटोज एंड फ्रूट्स. हर महीने हमको कितने वेजिटेबल्स, कितने पोटैटोज एंड कितने फ्रूट्स लगते हैं फॉर फैमिली. अभी मेरे फैमिली में 3 मेंबर्स है तो मैंने 3 मेंबर्स के हिसाब से यहाँ पे एंट्री डाला हुआ है. सो सपोज मैंने यहाँ पे 9 डाल दिया. नाउ just notice when I'm making an entry here automatically ये कॉलम और ये कॉलम सब चेंज हो रहे हैं. अभी मैंने 9 डाला था, अभी मैं वापस इसको 10 करती हूँ.
सो 10 कर रही हूँ तो यहाँ पे इक्वेलेंट अमाउंट पर ईयर वो अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। फॉसिल एनर्जी, नाउ ये सब टेक्निकल टर्म्स है जो शार्लेट मैडम बाद में इंटरप्रेट करेंगी, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन क्या है वो आपको बता रही हूँ। सो ये फॉसिल एनर्जी है, ये क्रॉपलैंड है। सेकंड है ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। अगेन ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स फॉर द एंटायर फैमिली, पर मंथ आपको कितने केजीज लगने वाला है वो हमको यहाँ पे डालना है। तो अभी फिलहाल मैंने सपोज यहाँ पे 3 डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 36, यहाँ पे 232 और 329। अगर आप ये पूरा टेबल देखोगे तो ये पूरे टेबल में ये सब एंट्रीज है। फॉसिल एनर्जी, क्रॉप प्लांट, पैस्चर, फॉरेस्ट, बिल्ट अप लैंड एंड फिशरीज। नाउ यू कैन सी दैट सब में एंट्रीज नहीं है। से फॉर एग्जांपल अभी ये वाली जो एंट्री है ये है मिल्क, क्रीम, योगर्ट, सर क्रीम। मिल्क, क्रीम ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं? पैस्चर से आते हैं। सो आप देख सकते हो कि उसमें क्रॉपलैंड भी है और इसकी एंट्री पैस्चर्स में भी है। सो ये सब बता रहा है हमको, यहाँ जहां जहां आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो बता रहा है कि वो सब चीजें यूज होती है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल सपोज ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स और से लेट्स से फर्स्ट वेजीज, पोटैटोज एंड फ्रूट्स, इसमें फॉसिल एनर्जी कितनी यूज हो रही है, क्रॉपलैंड कितने हो रहा है, यूज हो रहा है, ये कैलकुलेशंस यहाँ पे आ रहे हैं। ओके वैसे ही ये सब एंट्रीज हमको डालते जाना है। लाइक ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स डाला मैंने, फिर आटा, राइस, नूडल्स, सीरियल प्रोडक्ट्स है, सो मैंने 25 डाला है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। पर मंथ आपको पूरे फैमिली के लिए कितना लगता है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर ये सब पल्सेस है, मेज है, बीन्स एंड अदर ड्राइड पल्सेस है, तो उस हिसाब से आपकी जैसे जैसे एंट्रीज है यहाँ पे आप डाल सकते हो। मिल्क, क्रीम, योगर्ट, सार क्रीम, तो वो कितने लगते हैं आपको? इट इज इन लीटर्स। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 30 लीटर्स। आइसक्रीम अदर देन फ्रोजन डेयरी। ना आइसक्रीम तो हम डेली खाते नहीं है, अगर आप डेली खाते भी रहोगे तो उस हिसाब से आपको कितना आइसक्रीम या अदर फ्रोजन डेयरी आइटम्स जो आपको लगते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। चीज बटर कितना यूज होता है, और ना कोई लोग है जो ये सब बिल्कुल मिल्क प्रोडक्ट्स वेगन बोलते हैं, वो खाते ही नहीं है, तो उनका यहाँ पे 0 आएगा। आप नहीं ले रहे हो, नई प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पे एंट्री आप कुछ नहीं डालोगे, अपने आप वो 0.0 वहां पे रहेगा। नाउ आई एम अ वेजिटेरियन, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, सो मैं एग्स नहीं लेती हूँ, मीट नहीं लेती हूँ, तो वहां पे मेरी एंट्रीज पूरी 0 रहने वाली है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, कितने एग्स लगते हैं उनको नंबर में वो यहाँ पे उनको डालने हैं। मीट अगर कोई खा रहा है, फिश खा रहा है, वो सब एंट्रीज उनको उस हिसाब से यहाँ पे एंटर करनी है। नेक्स्ट कॉलम है शुगर, तो वो मैं डाल देती हूँ 5। वेजिटेबल ऑयल 5। मार्गरीन यूज जितना होता है। टी, कॉफी, जूस, वाइन्स ये नहीं है, बियर नहीं है। गार्डन, नाउ दिस इज एरिया यूज फॉर फूड, ये मेरा यहाँ पे 0 है क्योंकि मेरे पास कोई गार्डन एरिया नहीं है जहाँ पे मैं खेती बाड़ी करती हूँ। अगर गांव साइड में या आप उधर के साइड में कोई कर रहा है तो आप यहाँ पे कितनी एरिया यूज हो रही है गार्डन के लिए वो मीटर स्क्वायर में आप यहाँ पे डाल सकते हो। और ईटिंग आउट में कितना हम स्पेंड कर रहे हैं मंथली, तो सपोज मैं ईटिंग आउट में महीने का से सपोज 1000 रुपए स्पेंड कर रही हूँ या 2000 रुपए स्पेंड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अमाउंट डाल रही हूँ। कितना आया? $27 आया। सो $27 में यहाँ पे उस हिसाब से डाल दूँ। उस हिसाब से डाल। ये पूरा हो गया एक सेक्शन। उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस हो रहे हैं ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लू वाले में एंट्री करना है। फॉसिल एनर्जी कैलकुलेट हो रहा है, क्रॉपलैंड कैलकुलेट हो रहा है, पैस्चर कैलकुलेट हो रहा है। द टोटल आप देख सकते हैं कि फूड के लिए इतना सब टोटल हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हाउसिंग का। तो हाउस और अपार्टमेंट आपका कितना एरिया है बोल दो, यहाँ पे कहाँ कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ वुड, यानी अभी आपने हाउस लिया है, उसमें हम फर्नीचर करते हैं। अभी कुछ लोग फर्नीचर हर 2 साल में, हर 1 साल में चेंज करते हैं,
कुछ लोग वैसे ही रखते हैं। तो हाँ, आपने अभी सपोज मैं 18 साल से ये घर में रह रही हूँ, तो अभी तक मैंने कितना वुड यूज किया है वो हमको यहाँ पे डालना है। अभी सपोज मैं तो फर्नीचर ज्यादा हम चेंज नहीं करते हैं, 2 ही बार चेंज किया, तो सपोज मैंने यहाँ पे 15 kg डाल दिया, तो ये हमको उस हिसाब से ध्यान में रख के डालना है कि कितनी बार तुम चेंज कर रहे हो। फिर यार्ड है ये टोटल साइज, लाइक अभी हमारे यहाँ पर गार्डन वार्डन कुछ नहीं है, बट कुछ लोगों के पास बाहर कंपाउंड रहता है, गार्डन रहता है, तो वो टोटल एरिया मिला के आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये मेरा तो 0 होगा। नेक्स्ट सेक्शन है एनर्जी का सेक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टोटल हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं हर मंथ, वो यूनिट्स में हमको डालना है। तो ये आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देख के हम डाल सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं डालना है, वो तो परसेंट दिया हुआ है। से फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग 150 व्हाटएवर किलोवाट्स ऑफ एनर्जी, उसका फॉसिल फ्यूल है 69%, न्यूक्लियर एनर्जी है 20%, ये सब उनका अपने आप कैलकुलेशन यहाँ पे होता है जैसे हम डालते हैं। सपोज अभी यहाँ पे मैंने 175 डाला, अकॉर्डिंगली आप देखिए ये नंबर चेंज होता है। तो ये वो अपने आप सब कैलकुलेट करता है, हमको सिर्फ ये ब्लू इसमें जो भी भरना है हमको भरना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये सब यूज कर रहे हो तो आप डाल सकते हो लाइक नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम, फायरवुड। अगर कोई फायरवुड यूज कर रहा है, कोई ठंडी जगह पे रह रहा है, तो फायरवुड कितना यूज करते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। फ्यूल ऑयल या केरोसिन कोई यूज कर रहा है, अभी ये हम सब यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज नहीं डाल रही हूँ। हाँ, वाटर का एंट्री है यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड सिंस इट डिपेंड्स ऑन लोकल सर्कमस्टेंसेस। तो ये एंट्री आप देख सकते हो कि ये ग्रे कलर में है, which means you don't have to put anything here. तो ये हो गया टोटल 2। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन आप कौन सा यूज करते हो, यानी काम पे जाने के लिए या बाहर और कहीं आप घूमने जा रहे हो कैसे भी, तो वो हमको यूज करना है। वो भी सब लोगों का मिला के हमको यहाँ पे डालना है। अभी यहाँ पे सपोज मैं डाल रही हूँ, अभी मैं बस भी यूज करती हूँ, ट्रेन भी यूज करती हूँ। अभी यहाँ पे 2 आप देख सकते हो, एक बस ट्रांजिट है अराउंड द टाउन, एक बस है इंटरसिटी। पहला सेक्शन जो है बस ट्रांजिट, वो हम आपके शहर में ही अगर आप जाने के लिए बस यूज कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रहती हूँ, मुझे स्टेशन जाने के लिए बस यूज करना पड़ता है, तो मैं एंट्री डालूंगी यहाँ पे सपोज 25। एंड ये इंटरसिटी मैं यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं मुंबई में ही जा रही हूँ, तो दिस आई विल नॉट राइट। फिर ट्रेन है, मैं बस से स्टेशन जाती हूँ, फिर ट्रेन से मैं अपने कॉलेज तक जाती हूँ, तो यहाँ पे वो एक्चुअली डालूंगी पर किलोमीटर। इंटरसिटी मैं यूज नहीं कर रही हूँ तो मैं नहीं डालूंगी। कार में नहीं यूज करती हूँ, जो कार यूज करते हैं कॉलेज आने जाने के लिए या कहीं पे भी जाने के लिए, वो आप यहाँ पे कितने किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डालोगे। टैक्सी, अदर रेंटल, मोटरसाइकिल जिसके पास है वो, एयरप्लेन से जो जा रहे हैं वो। बट अभी ये सब मेरी एंट्री 0 होने वाली है, सो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। इस हिसाब से देखिए यहाँ पे सब कैलकुलेशन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आता है गुड्स का। अभी गुड्स में है क्लोथ्स, फर्नीचर, अगेन फर्नीचर, अप्लायंसेस, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सो ऑन। अभी क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल्स में आपको वापस क्या डालना है कि सपोज अभी हम लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, कुछ लोग एक साल में 5-6 जोड़ी कपड़ा ले लेते हैं और वही साल भर चलाते हैं। कुछ लोगों को बहुत शौक रहता है कपड़े लेने का, तो वो हर महीना कपड़े ले लेते हैं। सो ये सब साल के हिसाब से आप कितना कपड़ा ले रहे हो उसको आपको अप्रोक्सीमेटली केजीज में यहाँ पे डालना है। और वो कपड़ा यहाँ पे अज्यूम किया है, ये सब एंट्रीज है ना ऑलरेडी दिए इंस्ट्रक्शन फाइल में उन्होंने दी थी, तो उस हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ऐसे हम करते हैं कि एक कपड़ा 3 साल चलता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक ड्रेस खरीदा है तो वो ड्रेस मेरा 3 साल चलने वाला है, तो 3 साल के बाद मैं और एक ड्रेस लूंगी। इस हिसाब से यहाँ पे ये कैलकुलेट करके डालना है। सो से फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने 12 ड्रेसेस लिए, 12 ड्रेसेस लिए हैं और वो मैं 3 साल चलाने वाली हूँ। 3 साल 3 years 36 months, 12 3s are 36। सो 12 डिवाइडेड बाय 36 जो भी आपका रहेगा या जो भी केजीज आप यूज कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 36 करके आपको यहाँ पे नंबर डालना है। ये नंबर बहुत छोटा रहेगा बिकॉज जैसे मैंने बोला
उन्होंने ये अज्यूम किया है कि एक कपड़े यदि हम ले रहे हैं तो वो हम 3 साल आराम से चला सकते हैं। 3 साल, अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 5-10 साल भी चला लेते हैं। तो उस हिसाब से जितना आप केजी अज्यूम कर रहे हो उसको डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ इयर्स करना है और वो एंट्री हमको यहाँ पे डालनी है। सेम वे फॉर वुल, सेम वे फॉर सिंथेटिक। वुडन में हर साल का वुडन में भी वैसे ही कैलकुलेशंस करना है और ये जो भी आप यूज कर रहे हो इन कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, नॉर्मली कंप्यूटर्स वगैरह हम जब लेते हैं हम सालों साल उसको यूज करते हैं जब तक वो खराब नहीं होता है। तो उस हिसाब से हमको जो भी आपने अब तक लिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल अभी एक कंप्यूटर लिया है मैंने, वो से 2 kg का है और वो अभी तक मैं वही यूज कर रही हूँ, तो मेरा एंट्री यहाँ पे आएगा 2। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे सब एंट्रीज डालती जानी है। हो सकता है कुछ एंट्रीज आपके पास नहीं होंगी तो वो आप नहीं डालेंगे। उसके बाद ये सर्विसेज वगैरह है, ये मैंने नहीं डाली है। इम्पोर्टेंट जो था वो फूड कैटेगरी है ऊपर वाला, और यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं पोस्टल सर्विसेज, होटल्स वगैरह, आप कहाँ कितने होटल स्टे स्पेंड कर रहे हो पर मंथ, वाटर सर्विसेज कितने स्पेंड कर रहे हो, ये सब के लिए आपको बिल देखना पड़ेगा और बिल के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है। फिर ड्राई क्लीनिंग, लॉन्ड्री सर्विस है फॉर एग्जाम्पल, पर मंथ वी आर स्पेंडिंग 300 रुपीज। टेलीफोन वी आर स्पेंडिंग 500 रुपीज, बिकॉज 3 लोग हैं और तीनों के पास अलग अलग मोबाइल है। मेडिकल इंश्योरेंस सर्विस जो भी आपके रहेंगे अमाउंट वो आपको डालना है तीनों के हिसाब से। हाउस होल्ड इंश्योरेंस अगर कुछ रहेगा, एंटरटेनमेंट, हम पिक्चर देखने जाते हैं या हम किधर बाहर जाते हैं उस हिसाब से सपोज फॉर एग्जाम्पल 1000 डाला मैंने, 1000 डाला। और एजुकेशन के ऊपर हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल 3000। नेक्स्ट है वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, कितना पेपर और पेपर बोर्ड हम वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ पर पर्सन। से फॉर एग्जाम्पल पर्सन अगर हम 2 kg पेपर वेस्ट कर रहे हैं और मेरे घर पे 3 लोग हैं, सो 3 into 2 6 आई विल पुट हियर। जैसे ही आप ये सेल में क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक कमेंट आता है, आपने देखा रहेगा एक कमेंट आता है, पर कैपिटा वेस्ट 21 lbs पर पर्सन पर मंथ, बट वो उनके हिसाब से उन्होंने डाला हुआ है, ये हमको अपने हिसाब से डालना है। तो पर पर्सन पर मंथ, सो पर पर्सन कितना है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिलीज। सेम वे एल्यूमिनियम, अगर आप कुछ वेस्ट कर रहे हो, कुछ निकाल रहे हो, मेटल्स, ग्लास, प्लास्टिक भी हम लोग बहुत वेस्ट करते हैं। सो सपोज हमने यहाँ पे डाला 5, तो उस हिसाब से बाकी के कैलकुलेशंस हो रहे हैं। ये आया मेरा फाइनल आंसर। योर फुटप्रिंट, जिस हिसाब से मैंने वैल्यूज डाले हैं उस हिसाब से मेरा आंसर आया है 12.2 ग्लोबल हेक्टर्स, विच इज वेरी 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 मोर, बहुत ज्यादा है। और इसके मुकाबले मैं मेरी प्रकृति को कुछ वापस दे ही नहीं रही हूँ जो वापस जनरेट कर सकता है रिसोर्सेस मेरे लिए या मेरे आगे के पीढ़ी के लिए। नाउ ओवर टू शार्लेट मैडम। शार्लेट मैडम, Charlotte madam. Yes. Hello. Yes, Aarti? Charlotte ma'am, I've explained. Yeah. I have finished. Aarti, you'll have to keep your slide on. Yes. Yes, Charlotte madam. Yeah, First, just keep it. Yeah, just keep it. Please. Yeah, just keep what this. Is this? Yeah, keep this. No, keep the result. Keep the result first. Result. Aarti, result. Okay. Yeah. Yes. Wait. Yeah, that's it. That's the previous one. Previous. Result. Your result, 12.2. Yes. Yes, Charlotte. Not this, Aarti. That's it. So thank you, Aarti. And yeah, welcome. So friends, that's Aarti's ecological footprint. ये आरती मैडम का ecological footprint है और आरती मैडम का ecological footprint जो है 12.2
2 global hectares है और आपको मैंने slides में दिखाया कि the world average ecological footprint is 2.75 global hectare. तो आप समझो कि मैडम का 12 है, वर्ल्ड का 2 है, तो व्हाट इज इतना बड़ा डिफरेंस है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा आरती मैडम को. तो लेट अस ट्राई टू इंटरप्रेट व्हाट आरती हैज मेंशन्ड इन हर presentation. We'll try to interpret it first and then we will move on. Yeah. Aarti, you can go to the beginning. Yeah, I'm going. Start with food. Yeah. Here. Yes. Yeah. Yes, Aarti, from there it's fine. Yeah. Yes, friends. So if you look at Aarti's consumption patterns, if you look at food, if you look at veggies, the amount that she has spent, don't mind, friends, the calculation is in dollars is mentioned because this has been taken from a presentation which is US based, so you have dollars. Now the column for fossil energy, cropland, pastures, as you see to your right hand side is for Aarti to consume an amount of 10 per month. For only vegetables, it takes 310 fossil energy which is utilized and 208 cropland to be utilized. That is how, see, if you look at that in the beginning, at the top, if you see the head, just see the headlines, results in uncalibrated global meter squared. So 310 amount of fossil energy and 208 cropland required for that amount of consumption what Aarti is doing. So is Aarti on the right track? Aarti will have to think. So you have veggies for Aarti, which is on the higher scale. Then you have power, flour, rice noodles, cereals. Can you see the amount? It's coming to 360 equivalent amount per year, 360. Then Aarti has a lot of for your beans. Okay, Aarti, go down. Aarti, move down. Yeah. Then Yes. Aarti consumes a lot of ice cream. Aarti consumes ice cream. Aarti is a vegetarian, so she is one of the contributors for the India to be having a lighter footprint. So congratulations, Aarti. And Aarti eats a lot outside. Okay, so if you look at that eating out, so Aarti has a habit of eating out. So Aarti, so then if you go to the next point, if you go on to the housing, Aarti, go down. And please don't mind, friend, Charlotte is worse than Aarti. So you have housing, so that's fine. In housing, you have no option. So it depends. Now, when you talk about furniture, what Aarti said is absolutely right. You know, people, the lifestyles of people are changing. In this 21st century, every 6 months, somebody wants a new furniture. Every 6 months, somebody wants to change something or the other. So lifestyle, the consumption patterns are changing. So needs and wants of people, friends, are also changing. But we do not understand that this is having an impact on our environment. And we need to understand that. That's very important. Okay, so when I have construction of wood, I'm talking about you're making of furniture. Every 6 months, people want the furniture to be changed into different lifestyles. Then you have your energy. So energy, some people want all these LEDs are fine, but somebody wants some different fancy lights, and you know that consumes a lot of energy, and we need to take care. Aarti, your screen. Aarti, your screen is not showing. Aarti. My network went. I'll just share it. Fine. Yes. Yes, Charlotte, you can continue. Yes. But I can't see your screen. Yeah, fine, great. Yes.
Yes. Yeah. Now go down, Aarti. You can go Yeah. down. Yeah. Yes, yes, yes. Yeah. Go down. Yeah. Go down. No issues. Yeah. Go down now. Yes. Go down to goods. Yeah. Goods. Where is that? No, down. Up. No, wait. The goods section. Yeah. Yeah, here. Hmm. Here. Go down. I can't see it. Yeah. So this is energy. Yeah. After energy. Huh. Extremely sorry, I am having some network issue today. I don't know why. Yes, Charlotte, you see? Fine, Aarti. It's okay. Yeah. Yeah. Tell me. Yeah, see? Yes, Aarti. Fine. Perfect. Huh. Yes. Which category So you the want? transportation. You've got transportation. Yeah. Let's go to transportation. Huh. Yeah. So if you Yeah. just go little, go up. Transportation. Yeah. So if you look at transportation in terms of transportation, look at Aarti's spending. She is not traveling by flight, nor on bike, nor by taxi. It's very clear. Okay. Then we move on to goods. Aarti, goods. Yeah. Yes. So this is very important. Goods, that is the clothing that you wear, okay? The furniture, the plastics, your appliances, especially your electronic appliances, the number of electronic appliances that we are utilizing now, we are unaware of the amount that we have. Okay, the amount of leather goods that we have, we are unaware. Every 2 months, sometimes every 1 month, every week, people want to buy maybe a leather bag or leather purse, or we really don't know. They want to change their kitchen, they want to change their halls, and things keep changing, and the needs and wants of people are increasing every day. There is a greed. Okay, and that keeps increasing. In Aarti's case, I don't think it is very high, but that is what we need to take care. Our lifestyles need to be changing. I'm not saying you have to cut down, but you need to have some sort of sustained living while understanding the world scenario and how energy resources are being, or resources are being depleted. We need to understand the situation. Yes, Aarti, next. Services, you can go on from here. Aarti doesn't go out much. Aarti doesn't go to hotels. No much. Okay. Aarti spends on entertainment and education. Okay, fine. And waste. So yeah, that's fine, Aarti. And you have raised your uh, conclusion, which is your result. So friends, Aarti's footprint is 12.2 global hectares. The world footprint, as I told you, it is 2.0, and the national footprint is 1.12 global hectares. Footprint of India, 1.12. Aarti is 12.2. So, friends, if this can happen to a person who is a light, you call it a lighter footprint. Aarti is a lighter footprint because she's a pure vegetarian, okay? And that makes a difference. But even if a vegetarian can have a footprint like 12.2, imagine if it's a non-vegetarian, how high we will go. Okay, so we need to make a change. A change is very important. And right now we need to think. Every small step that you take, of course, will make a major change. Okay, so right now I would like to start my screening. Thank you, Aarti. Thank you, Charlotte, madam.
it's high time for us now to think as we have understood. We have gone through a long journey. From since yesterday, we are banging our heads on what we've done, and we have realized what we have done. Today, we have started thinking, yes, we need to, there should be some solution. Today, we have found out a solution. Today, we realized how to calculate, that everything requires calculation. And if you have noticed, friends, this is a very meticulous study which has been done, very meticulously. Each small step that you take, each small move that you make is calculated. And that is important because we go on overalls, we go on averages. No, you need to, each individual has to play a role. Each individual plays a role. So together you have many individuals, it's a local community, then it goes to the national and the global. That's how we make a change. It has to be done at various hierarchical levels. Otherwise the change is not going to be done. So friends, let us move on now to understand some mechanisms for ecological footprint management. This is something which most of you must be knowing, but I think we should start doing it. One is our consumption patterns. The first is you need to consume less. Now, when I say consume less, I don't mean that you don't consume. You should have some way of sustainable. Now, if I'm a non-veg, I can control that. I can have a substitute. I need to do it. I need to think about it, and that's important. Then simplify your life. As I said, people want in a month you want to have people want to go to malls and they want to go, their lifestyle changes. They want to go to restaurants. So going to a restaurant, just calculate your footprint from the time you're in your house, okay, to locking up, putting off your lights and getting out of the house, taking an auto, taking a bus or taking your vehicle, to the time you reach your mall. From there and you enter the mall to the time that you're, shopping, how much of energy is being wasted? That you need to think. Then you have reduce, reuse, recycle, compost, which you know. Redefine your economic outlook. Support locally owned businesses and services, externally owned big corporations. Sorry. Then you can buy locally grown, seasonal and organic produce. You can support local farmers. Buy fair trade coffee, tea, chocolate, bananas, fair trade. That farmers producing the commodities are paid fair for their wages and their work. Eat low on the food chain. This is important, friends. Reduce consumption of seafood and shellfish. This you know very well. Then, on the energy platform, drive less and travel less. Yes, friends, most of us want weekends out. So we need to control it at some point of time, and it's high time we do it. Support renewable energy resources. Our money, use local credit unions and communities. Invest money only in socially responsible and community project funds. At the community level, make time for your own interests and the people you cherish. Volunteer, support non-profit organizations, community groups working on social, political, environmental, peace and justice issues. Create community any way you can be creating service exchange. Live simply. That's important. Just live simply. And friends, other products, buy products which are manufactured sustainably, buy organic clothing, buy sweat-free and fair trade products, products made by giving fair wages to workers, buy 100% recycled chlorine-free copy paper and toilet paper saves trees and creates a demand for recycled paper. Buy good products, furniture, etc., which is FSC certified. FSC certification ensures that the food comes from sustainable forest practices. So, friends, it's time that we realize the choice is on every individual and on how we want to see our planet 5 years from now. To bring change, one has to be the change. It is time that we depend more on our locally produced food than processed food. Growing a garden at home and also developing more number of food assets in the community can help cutting down pollution from shipping, fertilizers, and packaging. According to the Economic Research Service, the US Department of Agriculture, a vegetarian diet has about half the carbon footprint of a meat lovers. So lowering consumption of meats can contribute to minimizing greenhouse gas emissions to a large extent.
Sustainable farming practices, policy implementations, and regulations can reduce the issues of overfishing and overgrazing. Flights contribute hugely to the planet's collective footprint, which is 2 to 4 times the impact of CO2 emissions on climate change. We can indirectly reduce our ecological footprint by avoiding short airplane trips while depending on a bus or train instead. Switching to alternative transportation like public transport, walking or carpooling can reduce the ecological footprint by 20 to 30%. According to the European Cycling Federation 2011, for every passenger distance in kilometer traveled by bicycle, 21 grams of carbon were released, whereas this was 271 grams from a driving car and 101 grams for bus. If using a vehicle is unavoidable, it must be serviced regularly so that the emissions control systems operates at peak efficiencies. Apart from the carrying capacity of the air, there is also a carrying capacity of roads and bridges in terms of space. Implementation of regulations like congestion pricing can be a good way of minimizing the number of vehicles and therefore traffic congestion. One large tree can replace up to 10 room-size air conditioners if operated 20 hours per day. Hence, it is our duty as individuals to promote management and conservation of trees and forests to bring down the increasing levels of carbon dioxide down through carbon sequestration. Last but not least, overpopulation is the root cause of all imbalances occurring worldwide. According to a report by Robin Roy and Sally Carr 2011, households account for a great percentage of greenhouse gas emissions generated. The more the size of households, more will be the land required to supply food, water, forest resources, waste assimilation, accommodating buildings, roads, and also carbon dioxide absorption. If we compare the building footprint in terms of size, the total embodied energy, housing materials used, number of dwellers, ecological footprint per built-up area and person would be higher in a 4-storied condominium than a single-story detached house. Also, switching from fossil fuel energy consumption to renewable energy can reduce the land used for generating energy. In Delhi, it was pointed out, which generates around about 9,500 tons of waste per day. 84% is collected and transferred to landfills, sites which have resulted in huge mountains of waste. The use of recyclable materials and products must be maximized to minimize the waste going to the landfills. This will eventually reduce the land area and duration of waste assimilation. There is an urgent need for people to focus on sustainable use of resources so that they are available in long term for the future generations. Friends, so we have realized that we have a solution, which is ecological footprints, and we are the ones who can make the change. We are the ones that we can play a major role in changing the environment by us, each of us, moving towards calculating our ecological footprints. And in today's times, I think all of us have realized how nature has brought man to a standstill. And as I told you yesterday, this is the right time for us to understand, because I don't know how many of you must be aware, but there is a saying, there is a proverb: God forgives, man sometimes forgives. Okay? भगवान भी माफ करते हैं, आदमी भी माफ करता है, लेकिन पर्यावरण कभी माफ नहीं करेगा. Nature will never forgive. They will never forgive. So that's what is happening today, and we need to understand. And I don't know how many of you must be knowing, but in present times, there's a lot of change that took place, and there were amazing things happening all around the world, which nobody had seen for maybe decades. Like, for example, you had the red-crowned parrots of Mexican rainforest, which was seen in Pasadena, Los Angeles, USA. They have never seen it for 40 years. The peregrine falcons were seen in the British Parliament House. For 50 years, they have never seen that. We have a Wayanad Wildlife Sanctuary, which is in Kerala, which is the National Highway 766, and that wildlife sanctuary witnessed forest choirs. They could literally feel the forest resounding in music
We as geographers have heard of forest fires. We have never heard of forest choirs. So it's amazing to have forest choirs. So it was something very different. Pumas were seen at Santiago in Chile. Our Sayadris itself were seen from Kochi. In Punjab, they could see it from Ludhiana. They could see the peaks of the Himalayas. You had a place called Pripyat. I don't know how many of you must be knowing of Pripyat. Pripyat is in Ukraine, and Pripyat was the place where you had the Chernobyl disaster. But today, if you go to Pripyat, you'll find more than 200 species, biodiversity species today at Pripyat. It's become a sanctuary. Then you have Canada, the Canadian Observatory, which observes the sounds of whales. As there were no ships in the ocean, there was no noise pollution, so they actually could hear very clearly the sound of the whales. Okay, so that's what I want to make you understand, how nature has come back. And so many things came to our light. And we need to think, we need to have a life like this in harmony, in gel with nature. We need to gel with nature. And unless we live in harmony with nature, it's very difficult, friends. So let's go hand in hand with nature so that we have a wonderful future for our future generations. Thank you so much. Yes. Thank you, ma'am. Yes, sir. Nairi sir, over to you. Nairi sir, over to you. Nairi sir, there is a noise behind you. Can you hear me, sir? Nairi sir. Yes, sir. Please take question and answer session. Question and answer session, sir. Due to the there is no question, sir. Sir, Mahale, sir. Okay. Okay. Proceed. Sir. Bansuri sir, please. Bansuri sir. Yes. Yes. Sir, there are no questions in the chat box of Zoom app. Shall we proceed? Hello. Can you hear me, sir? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Khinchi sir, please unmute yourself. There are no questions. May I request the principal of live feedback. Hello. Bansuri sir, you are audible, please. May I request the principal of our college, Honorable Ambedkar sir, to share his views on this occasion. Hello, good afternoon, everybody. Friends, we have just were present for the excellent webinar and on a very useful and interesting topic. ऐसे होता है कि हमें बुखार आता है तो डॉक्टर पूछते हैं भाई बुखार ऐसे बोल नहीं सकते सिर्फ बुखार आया है. डॉक्टर बोलते हैं कि थर्मामीटर लगाओ और कितना बुखार है वो बोलो तो उसके बाद में वो दवाई देते हैं बुखार कम है कि ज्यादा है. So whatever technique we have learned today, आज जो सीखा है, it is like a ecological thermometer. That is, it gives us exact idea of where we stand.
whether we are exploiting our nature or we are below that. And definitely we can make change in our day-to-day habit. And especially if we not compulsory, but we can also change from non-veg to veg if possible. See, always we feel now it is difficult to change our habits and so on, but our mind has got tremendous capacity. And that is why we can say where there is a will, there is a way. So we can do anything, we can change our habit, and we can adopt the habits, food habits and other this thing, which are useful for the sustainable development of our country and for the sustainable development of the entire environment. Friends, I take this opportunity to thank Dr. M.S. Punia, Principal of Dr. B.R. Ambedkar College, Sri Ganganagar, Rajasthan, Dr. S.S. Khinchi for joining us in this webinar as a co-host. And I also thank respected Vijay Patil Sahib, our chairman, for giving us this opportunity to conduct this webinar and guide us. Friends, today is a very auspicious day in my life. Today is 28/2020, so all 2020. And I'm so happy because this is last month. And this seminar, webinar was conducted by one of my favorite students, Dr. Charlotte Braganza. And I'm very happy. And because of her, I also get acquainted with Professor Aarti Nayak. Both of them are very devoted teachers, and you can make use of them for their knowledge, expertise, etc., for the presentation in your educational institute. Friends, I'm retiring in this month at the age of 65. I'll just take 3-4 minutes. And I'm completing about 46 years of service. For first 6 years, I was welder in BST as a transportation company. Then for next 6 years, I was in junior college as a teacher. And last 35 years, I'm in degree college. I was principal for 3 colleges in Maharashtra, written then more than 80 books and delivered more than 500 lectures. Friends, now I feel it is time to give back to the society what I have got. I don't believe in this thing, destiny, but I feel that I owe to the society. And I have designed and prepared many innovative teaching aids related to geography, science, and many different subjects. And I want to donate it to different schools and colleges all over India. So after retirement, after this month, from September onwards, my mission is whoever calls me, I will go there on my own. So no transportation costs, no honorarium, and I will take my teaching aids to that institution. I will explain them and I will donate those teaching aids to that institution. My mission is till the end of my life, I want to donate these teaching aids to different education. So my request to you is, if you feel it is appropriate, you can call me and I will come, and you will not have any single pie of expenditure for my coming. So friends, thank you very much. And as I told you, this is our last lecture of our webinar series. So, I'm very happy that it was very, very wonderful. हम नारियल खाते हैं ना, तभी ऐसे लगता है कभी मलाई वाला नारियल होता है या कभी पानी वाला नारियल होता है, लेकिन मलाई पानी साथ में वाला नारियल खाने में मजा थोड़ा और है. तो अभी आज ऐसे हुआ कि थियरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, and it has got practical utility. The things which we can use in our life, and in the background of COVID-19 or lockdown period, it is time to seriously think about our behavior as a man, and for the sustainable development, sustainable future, we'll have to take it seriously. Friends, thank you very much for your company, for sharing, and thanks all. And I must thank my entire team, Professor Mahale, then Professor Nahire, Bansode sir, Ingole sir, and their friends for successfully conducting these webinars. Actually, they learned these techniques, and I'm sure that they have acquired this expertise. So I'm very happy. So I remember well,
success comes to those who dare and act. So thank you very much, my friends, my colleagues. Thank you very much. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Now, the last but not least part of the program, that is, it is our duty and privilege to express this sense of gratitude towards the persons and the dignitaries and their participants. So, may I request Honorable Principal of Dr. B.R. Ambedkar Government College, Sri Ganganagar, Rajasthan, Dr. M.S. Sir, to share his view and express it over. Over to Dr. Sonia, sir. सभी को नमस्कार। संजीव ग्रामीण वैज्ञानिक एवं सामाजिक सहायता प्रतिष्ठान आर्ट्स कॉमर्स एवं साइंस कॉलेज ओंडे लालगढ़ पालगढ़ के पीजी डिपार्टमेंट ज्योग्राफी बॉटनी और इन्वायरमेंटल साइंस, इसके साथ साथ मेरे महाविद्यालय का पीजी डिपार्टमेंट भूगोल के तत्वाधान में 2 दिन की जो ये राष्ट्रीय वर्कशॉप की गई है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स पर, ये बड़ी ही सारगर्भित रही है। मैं तो ज्यादा समय इसमें नहीं दे पाया, लेकिन खिंची जी से अभी चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया है कि भाई बहुत सारगर्भित बातें इसमें निकल करके आई हैं जो हमारे देश और विदेश की अर्थव्यवस्थाओं के आने वाले समय में काम आए। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से आयोजित जो संस्थान है पालघर का, उस संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं। इसके साथ ही विशेष रूप से मैं जो पैट्रॉन या चीफ पैट्रॉन जो इसके हैं ऑनरेबल बीजी पाटिल सर, इसके साथ साथ डॉक्टर चेतना पाटिल कन्वीनर मेरे महाविद्यालय के एसएस खींची और कोऑर्डिनेटर विशेष रूप से डॉक्टर एचएम पेडनेकर सर, जिनसे मेरी पिछले दिनों मेरे यहाँ पे एक इंटरनेशनल सेमिनार हुई थी, उसमें हुई थी। सर को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी के साथ ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है उसमें दिनेश जे नाथरे, डॉक्टर जुनेद ए सैयद और नामदेव महले को भी विशेष रूप से मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे महाविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को शामिल करके यह ऐसी शानदार वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। और मैं आपसे इस अवसर पर अनुरोध और निवेदन भी करूंगा कि भविष्य में अगर इस प्रकार की सेमिनार्स या वर्कशॉप्स आपके द्वारा आयोजित की जाती हैं तो मेरे महाविद्यालय को, मेरे भूगोल विभाग को आप पुनः शामिल करें। सभी का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Dear participants, the link of feedback form will be shared in the group and in the chat box also. After filling in the feedback form, you will receive the certificate. Please, over to Mahale sir. Yes, sir. Yes, sir. Announcement. Announcement is there. Participant will get certificates within 7 days after this webinar. Please fill the feedback form carefully, as the name and institution name will be displayed on the certificate as it is from the feedback form. Thank you. Yeah, you can end the meeting, sir.